Okay, now let's talk about the parabola. It's kind of a U-shaped structure. अगर हम इसके structure की बात करें कि form किस तरह होता है, so again if we have that cone-shaped structure, double cones, तो अगर हम उसको एक plane से cut करते हैं and that plane is parallel to one of the sides of the cones and it only cuts one of the cones, that will give us a parabola. अब it can be open up, it can be open to the right, open to the left, or open downward. इसके बारे में हम आगे बात करते हैं. खैर, सो अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं. इट इज़ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स. अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं ऑन द पैराबोला, देन वी टेक इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड देन वी टेक द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. सो इट विल बी द एग्जैक्ट सेम. The figure that I have drawn is not to scale, तो इसलिए लग नहीं रहा, but it does show the core concept कि अगर हम फोकस से उसका डिस्टेंस लेते हैं और डायरेक्ट्रिक्स से लेते हैं उसका डिस्टेंस, तो it will be the exact same at any point. So that is the formal definition of a parabola. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, so in our specific case which is opening upwards, the A which is the focus is at the y-axis, and if we move A units down from the vertex is the point at where the parabola cuts the y-axis or the x-axis depending on which type of parabola that we have. So that will give us the directrix line. And then lastly we have the latus rectum. The latus rectum is the line that cuts the foci and starts from one side of the parabola, enter the other side and cuts the foci. So cuts the focus, so it's singular, so it's going to be focus, and the length of this line is equal to 4a. Again, a is the distance of the focus from the vertex, so 4a will give us the length of the latus rectum. And lastly, the axis that cuts the parabola into symmetrical portion is called the axis of symmetry. It can be either the x-axis or the y-axis. If we have a parabola that opens to the right, the equation is going to be y square equal 4ax. If it opens to the left, it's going to be y square equal minus 4ax. If it opens upward, it's going to be x square equal 4ay. And if it opens downward, it's going to be x square equal minus 4ay. So the conditions in this case that it must be quadratic in one variable. An equation which is quadratic in one variable is the equation of a parabola. Okay, now let's look at the hyperbola. Okay, again looking at that conic structure, if we have a straight vertical plane that cuts the two cones in such a way कि हमारे पास दो double U structure बन जाएं, and the U structures must be mirror images of the other, that's what we call a hyperbola. So अगर हम formal definition पे जाएं, तो it is the set of points whose difference from the foci is constant. अगर हमारे पास कोई भी एक point है on any one of the two hyperbola और हम उसका माइनस करते हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ फोकाई, मतलब हमने एक फोकाई से डिस्टेंस लिया और दूसरे से लिया उसको माइनस किया, so that distance will remain constant for any point on the hyperbola. That is like the formal definition. थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को देखते हैं. अगेन हमारे पास 2 U-shaped structure हो गया. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हाइपरबोला. सो अगर हम इसमें बात करें, सो वी हैव माइनस सी विच इज़ दी नेगेटिव साइड का हमारे पास फोकाई लेफ्ट साइड का, पॉजिटिव सी विच इज़ राइट साइड का, पॉजिटिव ए विच इज़ दी वर्टेक्स ऑफ राइट साइड, नेगेटिव ए विच इज़ दी वर्टेक्स ऑफ लेफ्ट साइड. अब हम आते हैं बी पे. बी क्या है? अब इसके लिए हमारे पास एसिम्पटोट्स का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, बट इस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं समझना है, आपने बस देखना ये है क्या. दीज आर 2 लाइन्स जो कि हमारे पास एक एक्स शेप फॉर्म करेंगे अराउंड दी हाइपरबोला. दे डोंट टच दी हाइपरबोला बट दे रन वेरी क्लोज टू इट, ऑलमोस्ट टेंजेंट कह लें. सो द बॉक्स दैट इनकम्पसेस दीज 4 लाइन्स इन इट्स कॉर्नर्स, उस बॉक्स को जब हम देखते हैं उसका इंटरसेप्ट, तो वो पॉजिटिव बी और नेगेटिव बी शो करता है. उस बॉक्स का इंटरसेप्ट ऑन दी पॉजिटिव वाई एक्सिस विल बी पॉजिटिव बी, ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस विल बी नेगेटिव बी. This is just to show you what positive B and negative B actually are in the figure, and what positive A and positive C and negative A and negative C are on the figure. इससे हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है फॉर योर MCQ, दैट इज़ ओनली द इक्वेशन. हमारे पास इससे इक्वेशन आती है C स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. कीप दैट इन इक्वेशन इन माइंड, बिकॉज जो एक्चुअल में आपके MCQ में आएंगी चीज़ें वो उससे रिलेटेड आएंगी. Okay, now we can move on to the equations of hyperbola. हमारे पास of course horizontal hyperbola एक होगा और vertical का different equations होगी. So for the horizontal we will have negative with the y-axis, and for the vertical we will have negative with the x-axis, and the actual equation is x square over a square minus y square over b square equal to 1. So the conditions for this is that their signs must be different. अगर for example x के साथ positive है तो y के साथ there must be negative. That is how you will identify hyperbola, and that is the equation of it. अब हम जाते हैं to some actually important equations जो आपके MCQs में बहुत आएंगी. So अब दोबारा हम एसिम्पटोट्स पे जाते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी, उनके साथ मैंने उनकी इक्वेशंस लिखी थी, बट अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली इक्वेशंस हैं क्या. सो हमारे पास जो पॉजिटिवली इंक्लाइंड है उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल प्लस बी ओवर ए एक्स, एंड जो नेगेटिवली इंक्लाइंड है उसकी होगी y इक्वल माइनस बी ओवर ए एक्स. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स. इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद होनी चाहिए.
Next we have that same equation which we talked about earlier, c square equal a square plus b square. Again इस equation को याद रखें, आपको पता होना चाहिए c है क्या, आपको पता होना चाहिए a क्या है और b क्या है. इनको find करने के formulas भी आपके पास हैं, that is a और c आपको फिगर से मिल जाएंगे और b का फॉर्मूला आपको है c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंड लास्टली वी अगेन हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी. अगेन इस फॉर्मूला को याद रखना है, समझना नहीं है बिकॉज दैट्स अनइम्पॉर्टेंट फॉर योर एनटी. एसेंट्रिसिटी इक्वल e विच इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट. That's it for conic sections. It's a pretty easy chapter if you think about it, but आपको equations याद रखनी पड़ेंगी and you must not get confused between the different conic sections.